Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good Good morning, morning, sir. beta. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. कैसे हैं आप लोग? सर बढ़िया। तो सब Good ठीक है? morning, ठीक है सर। यस Good सर। sir. ठीक है. Yes. Good, good. चलिए, let's start. काफी पढ़ना है अभी. So let's start with third ventricle. Fourth ventricle हो गया था. यस सर। And then last start with the third ventricle. एक मैंने आपको डायग्राम की फोटो भेजी है. वो अप्लाई करेगी थर्ड वेंट्रिकल के लिए भी और लैटरल वेंट्रिकल के लिए जो इसके बाद है. छोटे छोटे हैं बट ये आते हैं, पूछे जाते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट कहता है जो हमारा सारा CSF बनता है वो लार्जली लैटरल वेंट्रिकल से बनता है, में बनता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वेंट्रिकल और इसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा. थर्ड वेंट्रिकल्स के लिए लिखना शुरू कर दीजिए. थर्ड वेंट्रिकल is a median cleft. MEDIAN is a median cleft between the two thalami. यानी दोनों थैलेमस के बीच में होता है. It's a small median cleft between the two thalami. Between the two thalami. Full stop. It represents the cavity of diencephalon. It has a roof, anterior wall, posterior wall, and two lateral walls. As well as a floor. पहली हेडिंग डाल दीजिए, रूफ. ROOF, रूफ. It is formed by narrow sheaths, SHEATHS, by narrow sheaths of ependyma. Which above is in contact with telechoroidy, TELECHOROIDAE, telechoroidy of third ventricle, the lateral margins are attached to strimedullary thalami. Then floor.
from anterior to posterior, the floor is formed by hypothalamic structures and they are optic chiasma, tuber cinerarium, infundibulum, mammillary body, posterior perforated substance, and tegmentum of midbrain. Then anterior wall. Anterior wall it is formed by lamina terminalis, anterior pure, and anterior column of fornix. Anterior column of fornix. Fornix. Next, posterior wall is formed by pineal body, Pineal, pineal body, posterior commissure, and cerebral aqueduct. Cerebral aqueduct. Next, lateral wall. Lateral wall is formed by medial surface of thalamus, medial surface of thalamus, hypothalamus, and hypothalamic sulcus, which separates the thalamus from hypothalamus. Then communications. जैसे फोर्थ वेंट्रिकल कम्युनिकेट करती थी, इसी तरीके से थर्ड वेंट्रिकल भी कम्युनिकेट करेगी. डायग्राम में बहुत क्लियरली आपको मालूम पड़ जाएगा. It communicates with number 1, antero-superiorly
anterosuperiorly on each side with lateral ventricles through the interventricular foramen or foramen of Munro, MUNRO. इससे पहले आपने foramen of Lushka, foramen of Meninges. This is the third one, foramen of Munro. Number 2, posterior-inferiorly, it communicates with the fourth ventricle through cerebral aqueduct. Applied anatomy. Number 1, because third ventricle is a narrow median cleft, and its obstruction at the interventricular foramen of Munro leads to dilatation of lateral ventricle of that side. तो CSF का फ्लो रुक जाएगा और मेन CSF इज फॉर्म बाय द लैटरल वेंट्रिकल. अगर वहां से वो रुक गया तो उस साइड का लैटरल वेंट्रिकल का अगर इतना साइज है तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि CSF जो बन रही है वो फ्लो आउट नहीं हो पाएगी, तो सारा उसी साइड में इकट्ठी हो जाएगी. तो इट विल लीड टू डायलिटेशन ऑफ दिस साइज ऑफ lateral ventricle of that side. Number 2, if the obstruction is at level of aqueduct of Sylvius, it leads to dilatation of third ventricle
which in children causes hydrocephalus. 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 And in adults, it leads to increased intracranial pressure. पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा है कोई केस, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनका सर बहुत बड़ा होता है, सर है ना, सर बड़ा सा होता है, बहुत बड़ा सर। अगर कभी आप छुएं उसको तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा है। तो बेसिकली क्या होता है कि एंटीरियर फॉन्टेनल से मेनिंजेस बाहर आ जाती है और उनमें ये फ्लूइड इकट्ठा होता है। जब हम छूते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर फ्लूइड भरा है। तो दैट बेसिकली दी CSF, जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्लो नहीं हो रही बाहर फ्रॉम थर्ड वेंट्रिकल टू फोर्थ वेंट्रिकल, एंड वो एक्यूमुलेट होकर फिर अब वो यहाँ स्पेस होती बच्चों की, तो फिर वो बाहर निकला। एडल्ट्स में ये बोन फ्यूज हो जाते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनल सब क्लोज हो जाता है, तो इट कॉजेज इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन, प्रेशर बढ़ जाता है। नंबर 3, tumors in the floor of third ventricle. Tumors in the floor of third ventricle give rise to hypothalamic symptoms, like obesity, and diabetes insipidus. Diabetes insipidus. INSIPIDUS. Diabetes insipidus. Number 4, tumors pressing the optic chiasma. Tumors pressing the optic chiasma lead to visual defects. तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, एट द ऑप्टिक chiasma दे क्रॉस इट। यहाँ पे जब दबाव पड़ेगा तो ऑप्टिक नर्व ऊपर असर हो जाएगा, एंड इट कैन लीड टू varying types of or degrees of visual disturbances. Then we move on to lateral ventricle. Lateral ventricle. Diagram वही है, उसी को यूज कर लीजिएगा. You can use it here. Lateral ventricle. ये दो होते हैं और सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ये सिचुएटेड होते हैं. चलिए लिख लीजिए. Lateral ventricles. They are 2 in number. And are present in the cerebral hemispheres. They are present in the cerebral hemispheres.
Next line. Each lateral ventricle communicates with the third ventricle with through the interventricular foramen of Monro. Next line. Each lateral ventricle has 4 parts. Each lateral ventricle has 4 parts. Number 1, central part or body. Central part or body. Number 2, anterior horn. Anterior horn present in the frontal lobe. Number 3, inferior horn present in the temporal lobe. Number 4, posterior horn present in the occipital lobe. पे हेडिंग डाल दीजिए, बाउंड्रीज ऑफ सेंट्रल पार्ट और बॉडी. सेंट्रल पार्ट और बॉडी. Number 1, roof is formed by corpus callosum. Roof is formed by corpus callosum. आपको याद है कॉर्पस कैलोसम और कॉर्पस स्ट्राइटम में डिफरेंस क्या था? जल्दी से बताओ. कॉर्पस कैलोसम कहाँ है और कॉर्पस स्ट्राइटम कहाँ है? सर कॉर्पस कॉलोसम जो टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जॉइन अटैच करता था. हाँ, तो ये किस टाइप के फाइबर्स हुए? कॉमिशुरल फाइबर्स. कॉमिशनल फाइबर्स. ठीक. कॉर्पस स्ट्राइटम कहाँ है? कॉर्पस स्ट्राइटम कहाँ है? बेसल न्यूक्लियाई. बेसल न्यूक्लियाई. याद रखिए, आपको कई बार बता दूं, मैं फिर आपको इसी वजह से बता रहा हूँ कि अक्सर पूछे जाते हैं दोनों में से एक कभी कभी आ जाता है, ज्यादातर आ जाता है. तो प्लीज डोंट मिक्स अप. और मिक्सअप नहीं होने का एक ही तरीका, बार बार याद करिए. विल कीप, जब जब आएगा तो हम आपसे बात करेंगे. नंबर 2, फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय number 1, choroid plexus. Choroid plexus. Number 2, superior surface of thalamus. Superior surface of thalamus. Number 3, body of caudate nucleus. Next, striae terminalis. Number 4, striae terminalis. Number 5, thalamostriate vein. THALAMOSTRIATE. Thalamostriate vein. Then number 3, medial wall is formed by A, septum pellucidum. B, body of fornix.
body of fornix. Then boundaries of anterior horn. Boundaries of सर एक बार रूफ वाला बता दीजिए रूफ इज फॉर्म बाय roof. Roof is formed by corpus callosum. Roof is formed by corpus callosum. Then boundaries of anterior horn. The anterior horn is triangular. The anterior horn is triangular and directed forwards, laterally and downwards. Number one, roof is formed by corpus callosum. Number two, floor is formed by upper surface of rostrum of corpus callosum and head of caudate nucleus. Number three, anterior wall is formed by genu and rostrum of dash dash. सर कॉर्पस कैलोसम। बताओ भाई, आप लोग बताओ। कॉर्पस कैलोसम। आप लोग बताओ ये आंसर्स ठीक है या नहीं? कॉर्पस कैलोसम। और कोई बताएगा? यस सर। हाँ दीपक बताओ, सही है गलत है? सही है। सही है, चलिए। ऑफ कॉर्पस कैलोसम। Number four, medial wall is formed by septum pellucidum. Inferolateral wall is formed by head of caudate nucleus. Head of caudate nucleus. Next, boundaries of posterior horn. Boundaries of posterior horn. Number one, floor and medial wall are formed by number one, forceps major. That was A. B, calcareous.
calcarevis, Calcarevis, which is formed by raised anterior part of calcarine sulcus. Raised anterior part of calcarine sulcus. Number 2, roof and lateral wall are formed by tapetum, T-A-P-E-T-U-M, comma, optic radiation, and inferior longitudinal fasciculus. सर एक बार ये रिपीट कर दीजिए सेकंड पॉइंट. अच्छा. Roof and lateral wall are formed by tapetum, T-A-P-E-T-U-M, tapetum, comma, optic radiation and inferior longitudinal fasciculus. Then boundaries of inferior horn. Inferior horn is the largest horn of lateral ventricle. Number 1, roof is formed by a tapetum of corpus callosum, B, tail of caudate nucleus, C, amygdaloid body, D, striae terminalis, E, thalamostriate vein, Number 2, floor is formed by A, collateral eminence, C-O-L-L-A-T-E-R-A-L, collateral eminence. B, hippocampus, H-I-P-P-O-C-A-M-P-U-S, hippocampus. C, fimbria, F-I-M-B-R-I-A. D, dentate gyrus.
इसके बाद एक चीज रह गई थी, उसको जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं so that you can complete head and neck. And that was meninges. Meninges. ये 3 membranes होती हैं which cover the surface of brain and spinal cord. 3 आपने नाम सुने होंगे. From outer to inner side they are durameter, arachnoid mater and pyometer. आपको स्पीशीज उस दिन बताई थी. वो नाम पड़ता है जो लेयर होती है उसके नीचे, जैसे ड्यूरामीटर और एरेक्नॉइड मीटर के बीच में एक स्पेस है और सब ड्यूरल स्पेस. एरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच में एक स्पेस होती है, दैट इज कॉल्ड सब एरेक्नॉइड स्पेस. ऐसे ही लिख लीजिए मेनिंजेस के बारे में. और इसी में आपको सीएसएफ के बारे में भी लिखा देते हैं, आपको उसका फॉर्मेशन और उसका कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सीएसएफ. तो हेडिंग डाल दीजिए मेनिंजेस. मेनिंजेस MENINGES. These are 3 membranes covering the surface of brain and spinal cord. Also, they are Some surface of brain and spinal cord. They are outer durameter, that is A outer durameter, B middle arachnoid mater, ARACHNOID, arachnoid mater, MATER, arachnoid mater, and C inner pyometer. Inner pyometer, PIAMATER, inner pyometer. Full stop. Arachnoid mater and pyometer together form leptomeninges. Leptomeninges, LEPTO meninges, leptomeninges. अब ड्यूरामीटर के बारे में लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए ड्यूरामीटर. ड्यूरामीटर, DURAMATER, ड्यूरामीटर. The durameter is the outermost thickest and toughest covering of the brain.
It has two layers, A, an outer or end osteal layer, ENDOSTEAL, an outer end osteal layer which acts as an internal periosteum or endocranium of the skull bone. पेरियोस्टियम क्या होता है? बोन की लेयर होती है आउट बोन की तो बहुत सारी लेयर होती है. Sir, outermost layer of the bone. हाँ, ये दीपक आप कहोगे ना सर यही लेयर तो बोला था आउटर लेयर लोअर तो कॉम्पैक्ट भी बोन होती है, स्पंजी बोन भी होती है. सी इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बोन. पूरा जवाब भी आपको जब मालूम है ना बेटा, तो ऑलवेज वाइवा में पूरा जवाब एक ही बार में दीजिए. हाँ, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बोन. बी, an inner or meningeal layer, an inner or meningeal layer which surrounds the brain, Also, this layer is continuous with spinal durameter, The meningeal layer forms 4 folds, 4 folds which divide the cranial cavity into 4 compartments which lodge LODGE, which lodge different parts of the brain. सर विच के बाद क्या बोला? Which lodge LODGE, जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, इनमें में वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर प्रेजेंट और lodged of the brain. Full stop. The folds are number 1, Fox cerebri, FALX, Fox cerebri. Number 2, Tentorium cerebri, Number 3, diaphragma celli, SELLAE.
diaphragma celli, SELLAE. Number 4, Fox cerebelli. Fox cerebelli. Then arachnoid mater. Arachnoid mater. Arachnoid mater is a thin transparent layer, thin transparent layer that loosely, LOOSELY, which loosely surrounds the brain without dipping into the sulci. Also, it bridges, BRIDGES, it bridges all the irregularities. It bridges all the irregularities of the brain. Then pyometer. It is a thin vascular membrane which closely covers the brain, and dips into sulci, and other irregularities of the brain. ये बहुत briefly थी about the 3 meninges. Then spaces. जो spaces होती हैं, और जब आप पढ़ेंगे, आप होता है ना कभी कभी कि कमर में एनेस्थीसिया दे दिया और ऑपरेशन कर दिया, तो वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे देते हैं, किस स्पेस में वो दवा डालते, अब आपको पता लगेगा. ये जो एपिड्यूरल स्पेस होती है ना, या एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस होती है जो क्रेनियम और ड्यूरामेटर के बीच में होती है, इसमें डालते हैं. पहला लिख लीजिए, एक्स्ट्रा ड्यूरल, EXTRADURAL, एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, और एपिड्यूरल, EPIDURAL. Now, epi means above, so this is above the durameter. It is a potential space. It is a potential space between the inner aspect of skull bone, and the end osteal layer of durameter. End osteal layer of durameter. ये outer layer थे durameter की, which is known as the end osteal layer.
Number 2, subdural space. Subdural space. It is a potential space. It is a potential space between dura mater and arachnoid mater. It is traversed by Traversed. It is traversed by cerebral veins. Cerebral veins. Full stop. Full stop. It is traversed by, again, same. It is traversed by a network of arachnoid trabeculae, which give it a sponge-like appearance. Full stop. It surrounds the brain and spinal cord and ends below at the lower border of second sacral vertebra. And number 3, subarachnoid space. The subarachnoid space is नहीं, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा. Subdural space में मैंने लिखा था ना, it is a potential space between dura mater and arachnoid mater. It is traversed by cerebral vein. ये यहीं तक है dura mater. Dura mater यहाँ पे खत्म हो जाता है. आगे जो लिखा था ना, it is traversed by a network of arachnoid trabeculae. Sorry, this is a part of the
सब एरेक्नॉइड स्पेस, उसको काट दीजिए, पूरा काट दीजिए. इट इज ट्रेवर्स बाय सेरेब्रल वेव के बाद उसको काट दीजिए, पूरा हम फिर से लिख पा रहे हैं. सब एरेक्नॉइड स्पेस फिर से लिख पा रहे हैं. अब लिख लीजिए, सब एरेक्नॉइड स्पेस कर लीजिए. सब एरेक्नॉइड स्पेस lies between durameter and sorry, थोड़ा confusion हो रहा. It lies between arachnoid mater and pia mater. Between arachnoid mater and pia mater. It is traversed by, अब ये पूरा लिखना है फिर से. It is traversed by a network of arachnoid trabeculae which give it a sponge-like appearance. Full stop. It surrounds the brain and spinal cord and ends below at the lower border of second sacral vertebra. Next line, continuation. The subarachnoid space contains cerebrospinal fluid, or CSF, capital letters में CSF, and large vessels of brain. Large vessels of brain. Full stop. Cranial nerves pass through this space. Full stop. The subarachnoid space communicates with the ventricular system of the brain, and these are a foramen of Meninges, rather median foramen of Meninges, B, two lateral foramina of Luschka situated in the roof of
situated in the roof of fourth ventricle. This next line, the next line. The CSF passes through these foramen. The CSF passes through these foramen from the fourth ventricle to the subarachnoid space. अब लिख लीजिए about the cerebrospinal fluid. ये हम सबको मालूम होना चाहिए. What is CSF and what is the normal composition of CSF और क्या uses हैं या क्या functions हैं CSF. हेडिंग डाल दीजिए cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid और CSF और CSF. लिख लीजिए इसको. The CSF is a modified tissue fluid. Is a modified tissue fluid. Full stop. It is contained in the ventricular system of the brain in the subarachnoid spaces around the brain and spinal cord It replaces lymph in the CNS, that is the central nervous system. Next heading is formation. Most of the CSF is formed by choroid plexus of the lateral ventricle and some of it is also formed by the choroid plexus of third and fourth ventricles. Next line. Total quantity of CSF is about 150 ml.
150 ml full stop. The rate of formation is 200 ml per hour, 200 ml per hour, or 5 liters per day. Normal pressure of CSF, normal pressure of CSF is 60 to 200 millimeters, 60 to 200 millimeters of CSF और वाटर, ये इसके प्रेशर की यूनिट है, CSF और वाटर. Then composition of CSF. Number 1, proteins 20 to 40 milligrams, 20 to 40 milligrams per 100 ml. Number 2, sugar 50 to 75 milligrams, 50 to 75 milligrams per 100 ml. Chlorides 720 to 750 milligrams per 100 ml, 720 से 750 milligram per 100 ml. Number 4, cells 0 to 0.5 cells. CSF एक स्टेराइल फ्लूइड होती है, इसमें ये जो सेल्स होते हैं किसी भी प्रकार के नहीं पाए जाने चाहिए, इसीलिए नॉर्मल कंटेंट इज 0 to half a cell, एक भी नहीं, half. Then functions of CSF. Number 1, CSF decreases the sudden pressure, or forces, 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 on the delicate nervous tissues, Number 2, it nourishes the nervous tissue because only CSF
comes in contact with neurons. Comes in contact with neurons. Number 3. Neurons cannot live without glucose or oxygen for more than 3 to 4 minutes. More than 3 to 4 minutes. Glucose is constantly supplied by CSF. Glucose to them, to neurons, to them, is constantly supplied by CSF. Next, there is no CSF brain barrier. There is no CSF brain barrier. Therefore, drugs can reach the neurons. Number 5, there is blood CSF barrier. Blood CSF barrier, ब्रैकेट में blood brain barrier, because of which there are no antibodies in the brain, in CNS. In CNS. Making infections of the brain, very serious condition. Then applied anatomy. Number 1, hydrocephalus. भी बात हुई थी ना हाइड्रोकेफलस की, अगर obstruction हो जाए to the flow of CSF or there is obstruction at the level of the third ventricle, it causes hydrocephalus. It is the dilatation of the ventricular system of the brain due to obstruction of CSF circulation. Full stop. It is usually seen in children.
Number 2, in adults, CSF circulation obstruction, CSF circulation obstruction leads to increased intracranial pressure or tension, causing severe headache, SEVERE से बहुत जोर से सर में दर्द होता है, severe headache. Number 3, CSF is also examined for diagnostic purposes and used for therapeutic purposes. कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो इंट्राथीकल इंजेक्शन देके डायरेक्टली CSF में डाल देते हैं, वो फिर कैरी ले जाती to the target area. Number 4, the CSF can be withdrawn, WITHDRAWN, can be withdrawn. आपने अक्सर सुना होगा कि रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला गया, रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला. Now this is withdrawing of CSF. It is only, और जो प्रोसीजर होता है that is called as lumbar puncture or lumbar tap. CSF can be withdrawn from the vertebral canal by inserting a needle in the intervertebral space between L3 and L4 vertebrae. L3 and L4 vertebrae. Full stop. This procedure is known as lumbar puncture or lumbar tap, TAP, lumbar tap. So with this, we complete the study of brain. Up, we have to move into the head and neck area. Face, head, neck area में जाते हैं और आपको कुछ मैंने डायग्राम भेजे थे सुबह में.
कुछ चीजें हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर बाकी बाद में हम पढ़ते रहेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, थायराइड, थाइमस। तो लेट्स कंप्लीट दिस टुडे एंड टुमारो। लेट्स कंप्लीट आज ही में थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस वी कैन फिनिश। आपको थायराइड का डायग्राम भेजा था मैंने, थायराइड ग्लैंड का। तो हेडिंग डाल दीजिए थायराइड ग्लैंड, THYROID, थायराइड ग्लैंड। आप सब लोग परिचित हैं ये वाले ग्लैंड के। इट इज सिचुएटेड हियर, यहाँ पे होता है एच शेप ग्लैंड होता है, द थायराइड ग्लैंड। और इसमें दो 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 लोब्स होते हैं, एंड देयर इज अ पिरामिडल लोब आल्सो इन दिस। लिख लीजिए, बहुत इजी है, इट्स एन इजी टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद द थायराइड ग्लैंड। The thyroid gland, the thyroid gland is an endocrine gland present in the lower part, in the lower part of the front and sides of the neck. Lower part of the front and sides of the neck. Front and sides of the neck. So it regulates the basal metabolic rate, basal metabolic rate, bracket में BMR, comma, stimulates somatic and psychic growth, PSYCHIC, somatic and psychic growth, and plays an important role in calcium metabolism. अब यहाँ पे डायग्राम जो आपको भेजा था ना, वो बना लीजिएगा। डायग्राम डिपिक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। उस पेज छोड़ के ना, आधे पेज के उसके बाद लिख लीजिए। The gland consists of right and left lateral lobes joined to each other by isthmus, ISTHMUS, by isthmus. Full stop. A third lobe
projects upwards from the isthmus, from the isthmus, and is known as pyramidal lobe. Pyramidal lobe. Also, sometimes a fibromuscular or fibrous band known as levator thyroidae, THYROIDAE, levator glanduli thyroidae, levator glanduli, GLANDULAE thyroidae, ये पूरा नाम levator glanduli thyroidae, descends from the body of hyoid bone to the pyramidal lobe or isthmus. Full stop. The gland lies against vertebrae C5, C6, C7 and T1 Next, dimensions and weight. Each lobe measures about 5 into 2.5 into 2.5 centimeters. Length into breadth into height. That was 5 into 2.5 into 2.5. That was length, breadth, and height. Full stop. Isthmus is 1.2 into 1.2 centimeters. Average weight is 25 grams. Average weight is 25 grams. Next setting डाल दीजिए. Capsule of thyroid gland. The thyroid gland is enclosed in two capsules. Number one, true capsule, TRUE. True capsule is formed by peripheral condensation
of peripheral condensation of peripheral connective tissue of the gland. Peripheral connective tissue of the gland. Number 2, false capsule. False capsule is formed by pretracheal fascia, PRE, pretracheal fascia, full stop. Superiorly, this pretracheal fascia is attached to the oblique line of thyroid cartilage and because of this the thyroid cartilage the thyroid gland, not cartilage, the thyroid gland moves during swallowing or deglutition. Deglution. Deglutition is the act of swallowing. जब swallow करता है enlarge, अभी तो दिखता नहीं, जब enlarge हो जाता है, it moves up and down. Next line. Each lobe consists of a base and apex, comma, three surfaces, bracket, lateral, medial, and posterolateral. Lateral, medial, and posterolateral, comma, two borders, anterior and posterior. Then arterial supply. Number 1, superior thyroid artery. Number 2, inferior thyroid artery. Number 3, thyroidema. THYRODAE, thyroidema, IMA, in 3% of individuals. Then venous drainage. Number 1, superior thyroid vein, middle thyroid vein, inferior thyroid vein, then fourth thyroid vein, fourth thyroid vein or vein of Cocker, COCHER. चलिए यहाँ पे हम लोग रुकते हैं. We'll continue
एट 2 o'clock। दो से 3 है ना क्लास आपका हमारा। We'll meet again at Yes, 2 sir. o'clock। हाँ, फिर यहाँ से we'll continue। Yes, sir. चलिए आप लोग भी खाना खाइए, relax and we meet at 2 o'clock, okay?